Hello students, a very good evening to all of you. I, Anupama, welcome you all at the SAAVAL classes. I hope you all are doing fine, and now obviously you have to be on your toes. I hope you have already got yourself on your toes, because now you have got your exam date and now you have limited time. Obviously you all are preparing since January, so काफी टाइम मिल गया है हमें, ठीक है। तो अब जितना भी टाइम है उसको वाइजली यूज करना है, ठीक है। वेरी फाइन संध्या, वेरी फाइन। बहुत जल्दी मिलेंगे वरिंदर, बहुत जल्दी। मोस्ट प्रोबेबली आपको हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। आज ही सुबह सर के साथ इस चीज की प्लानिंग कर रहे थे। एवरी वीक you will be getting your mock test. बिल्कुल, we have been waiting. अब मुझे डर लग रहा था कि मुझे कहीं 5th बैच ना स्टार्ट करना पड़ जाए। Very good evening, सत श्री अकाल. My blessings are always with you all, Sarita. I don't think बच्चे एज रिलैक्सेशन वाला कुछ नहीं करा गवर्नमेंट ने। आप लोगों ने बहुत प्रेपरेशन कर रखी है, राइट? Most probably, yes, I know that, Varinder. बच्चे देखो, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਚ ਪੇਪਰ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਬਟ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਲੀਨੀਅੰਟ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਲਾਈਕ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਨਾਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, I can only suggest make a proper time plan, अपना proper schedule करो, time बनाओ, and forget about everything else. I know that for mothers it is difficult to forget about their children, and for all those who are working, be it like men or women, है ना, वो भी चीजें मुश्किल है इग्नोर करना। बट बाकी जितना भी टाइम रह जाता है उसको लेके तो मैं इतना ही कह सकती हूँ कि फिर सोना भूल जाओ, ठीक है। जितनी ज्यादा देर अपना रिवीजन कर सकते हो, जितना ज्यादा अच्छे से रिवीजन करोगे, रिपीट करोगे चीजों को, तो उतना जो है चीजें अच्छे से माइंड में रहेंगी, ठीक है। आई एम वेयरिंग मिनी माउस, ठीक है मनप्रीत, ओके। चलिए जी बच्चे, शेड्यूल आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करोगे ना, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका वर्क शेड्यूल क्या है, कैसे है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जितना टाइम आपको मिलता है, यस इट इज ऑन 4th सितंबर एंड द वेरी नेक्स्ट डे इट्स माय बर्थडे। तो चलिए, हाँ बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे। मुझे पता है आप लोग सब बहुत अच्छे से अपना एग्जाम देके आएंगे, और सब लोग मुझे बिल्कुल खुशी से बताएंगे कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। एंड डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द जॉब, डेफिनेटली। नर्वस नहीं होना है बस, ठीक है। मुझे पता है नर्वसनेस होती है, ये कहने वाली बात है, बट कॉन्फिडेंस भी रखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी रखना है, अपनी तरफ से 100% देना है, फिर भगवान को कहना है कि मेरे साथ रहें, ठीक है। वो आपके साथ रहेंगे, आप अपनी मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली एवरीथिंग विल टर्न आउट टू बी गुड, राइट। दोनों चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करो, एमसीक्यूज पे भी कॉन्सेंट्रेट करो, और जो थियोरी में हम पढ़ चुके हैं वो भी, एवरीथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू,
राइट, एवरीथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू। बिल्कुल मनप्रीत, हम बिल्कुल मिलेंगे। मेरी ब्लेसिंग्स सभी के साथ हैं बच्चे, सभी के साथ, दे आर विद यू ऑल। ठीक है, बस बिना नर्वस हुए, बिना डरे अपना रिवीजन करते रहो। ठीक है जी, चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 16 of the most important questions. And before moving on to the questions, do not forget to like the video, subscribe to the channel and press the bell icon ताकि आपको important notifications जो हैं मिलते रहें। राइट, आंचल वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन in the rape of the lock, Belinda's guardian sylph is unable to prevent the Baron's fatal mischief because पीटर बैरन ने जो किया बेलिंडा के साथ, जो वो उसका लॉक काटने में कामयाब हो जाता है, वो कैसे हो जाता है? He discovers an earthly lover lurking in Belinda's heart. He is disturbed by Clarissa's speech. The view is blocked by imposing figure of Sir Plume. He is yet to return from a visit to the cave of spleen. मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन करी थी कि जो वो सिल्फ्स थी, उनकी एक कंडीशन थी जिस कंडीशन पे वो लेडीज को, गर्ल्स को गार्ड करते थे। ठीक है, यस, क्योंकि उनको ये महसूस हुआ कि बेलिंडा के हार्ट में जो है पीटर को लेके कुछ फीलिंग्स आ रहे थे, इसलिए they didn't get successful in saving बेलिंडा, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई बेलिंडा के उस लॉक को बचाने में। क्वेश्चन नंबर 2, in Sense and Sensibility, Austen portrays an excess of sensibility in। हाँ जी, सेंस एंड सेंसिबिलिटी में सेंसिबिलिटी को कौन रिप्रेजेंट करता है? मरियन, मार्गरेट, एलिनोर और लूसी? हाँ जी, कौन रिप्रेजेंट करता है सेंसिबिलिटी को जेन ऑस्टन के सेंस एंड सेंसिबिलिटी में? वेरी राइट, इट इज मरियन। क्वेश्चन नंबर 3, which of the two novels of Anita Desai were shortlisted for the Booker Prize? हाँ जी, इनमें से कौन से दो नॉवेल्स अनीता देसाई के शॉर्टलिस्ट हुए थे बुकर प्राइज के लिए? The Artist of Disappearance and In Custody and Fasting Feasting and the Zigzag Way, In Custody and Fire on the Mountain. Yes, it is In Custody and Fasting Feasting. Question number 4. In sonnet, Death Be Not Proud, Donne says to Death, those whom thou thinkest thou dost overthrow, die not, poor Death, nor yet canst thou kill me. कि death जो है किसी को नहीं मार सकती. What does he mean? Death is very strong. Death is not death because after death we wake up to live eternally. One must face death courageously and defiantly. Death is not strong as he thinks he is. हाँ जी, those whom thou thinkest thou dost overthrow. Die not, poor death, nor yet canst thou kill me. Yes, exactly. Death is not death. क्योंकि death के बाद we become eternal, we become long lasting. हमारी soul जो है it becomes long lasting, it becomes immortal, right? Question number 5. In the following two are lists of works and their themes. Match them correctly. The Heart of Midlothian, Tess of the D'Urbervilles. The End of Affair, The Golden Bowl. The Heart of the Matter, Lord Jim. Heart of Darkness, Nostromo. हाँ जी, क्या themes हैं इनकी? The Heart of Midlothian or Tess of the D'Urbervilles. The End of the Affair or Golden Bowl. The Heart of Matter, Lord Jim. Heart of Darkness, Nostromo. Yes. Heart of Midlothian और Tess of D'Urbervilles में क्या दिखाया है? इसमें दिखाया है इन्फेंटिसाइड, ठीक है, छोटे बच्चे की डेथ। द एंड ऑफ द अफेयर और गोल्डन बोल में दिखाई है अडल्ट्री। ठीक है, एंड ऑफ द अफेयर ग्राहम ग्रीन का वर्क है ये। ठीक है, हार्ट ऑफ द मैटर लॉर्ड जिम में क्या दिखाया है? इट्स ऑलमोस्ट लाइक सुसाइड। ठीक है, और हार्ट ऑफ डार्कनेस और नॉस्ट्रोमो में देयर इज ग्रीड। So the right option is A. Very right. Question number 7.
The following are two lists of characters in the works in which we find them. Match them correctly. रत्ना, रघु, पद्मा और माया. हाँ जी, इन कैरेक्टर्स को उनके वर्क्स के साथ मैच करना है आपको. रत्ना, रघु, पद्मा और कांथापुरा. Yes, Ratna is in Kanthapura, right? Raghu is in A House for Mr. Biswas. Padma is in Midnight's Children, and Maya in Cry the Peacock. So the right is C. 4, 1, 2, 3. Very good. Question number 8. In spite of being constant in his relationship with Sophia, Tom is involved in relationships with 3 other ladies in the 3 parts of Tom Jones. Here is a list of these women. Find the odd one out. Molly Seagram, Mrs. Weston, Lady Booby और Lady Bellaston. हाँ जी, इनमें से कौन सी गर्ल के साथ टॉम का रिलेशनशिप नहीं रहा होता? Was involved in many relations? Yes, because Lady Booby is in Joseph Andrews, है ना? क्योंकि Lady Booby कैरेक्टर कौन है? Joseph Andrews में. Very right. Question number 9. This novel by Lawrence was greeted with headlines: a book the police should ban, loathsome study of sex depravity, misleading youth to unspeakable disaster. Its opening chapter was originally suppressed. Name the novel. Lady Chatterley's Lover, The Rainbow, Woman in Love or The White Peacock. हाँ जी, किस नॉवल के लिए कहा गया that this book should be banned? Yes, it was Lady Chatterley's Lover. Very, very right. Question number 10. Who among the following English writers opposed the Licensing Act of 1643? John Milton, Thomas Browne, Andrew Marvell or Abraham Cowley? Which of the English writers opposed the Licensing Act? Yes, it was John Milton in his prose tract Areopagitica. Very right. In his prose tract Areopagitica. Very right. Question number 11. Who claimed, I have not published a single paper that is not written in a spirit of benevolence and with the love of mankind? कि मैंने कोई भी आर्टिकल जो है बिना काइंडनेस के, ठीक है, बिना लव के नहीं लिखा. पोप, ड्राइडन, स्विफ्ट और एडिसन. यस, कि मैंने जो भी आर्टिकल्स लिखे हैं, आई हैव रिटन इट with spirit of kindness and with the love of mankind. Yes, it is Joseph Edison. We have done this question earlier. Very good. Question number 12. A protagonist writes a letter of confession, but it gets lost under the carpet only to be found on the wedding day. Who is the protagonist? Bathsheba, Lucetta, Sue or Tess? हाँ जी, कौन सा protagonist जो है writes a letter of confession, but वो letter गुम जाता है? Yes, it is Tess of D'Urberville and she writes the letter to Angel Clare. ठीक है, और वो किसको letter लिखती है? Angel Clare को. Question number 13. In Lord of the Flies, which character comes to realize that the beast is actually the evil inside the boys themselves, and it is that which is breaking things up? Jack, Simon, Roger or Ralph? हाँ जी. Who is the character in the Lord of the Flies? I will be sharing the video soon, Balvinder. We are going to make a video for the strategies and we'll be sharing that. Most probably by Monday, Tuesday, we'll be sharing that video. Yes, it is Simon. Very good. Good. जो कि represent करता है Christ को. Question number 14. Dryden's dramatization of Paradise Lost is entitled All for Love, The State of Innocence, Annus Mirabilis और Religio Medici. हाँ जी, ड्राइडन का एक वर्क पैराडाइज लॉस्ट से इंस्पायर्ड था. Which one was that? All for Love, The State of Innocence, Annus Mirabilis or Religio Medici? Yes, it was The State of Innocence. Absolutely correct. Question number 15. Who defined poetry as the best words in best order? Wordsworth, Coleridge, Keats or Shelley? हाँ जी, किसने कहा that poetry is the best words in best order? Who said poetry is the best words? Yes, Coleridge in Table Talks. Very right. Question number 16.
What did Thomas Carlyle mean by close thy Byron and open thy Goth? Retains preeminence as a global power will depend on mastery of foreign languages. Abandon the introspection of romantics and turn to the higher moral purpose found in Goth. Even a foreign author is better than a homegrown scoundrel, or leave England and immigrate to Germany. क्या मतलब था? Close thy Byron and open thy Goth. Yes. कि रोमांटिक्स को छोड़ दो, गोथ पे फोकस करो, गोथ को पढ़ो. ठीक है. Question number 17. Christopher Marlowe wrote all the following plays except Tamburlaine the Great, Jew of Malta, Richard III, or Edward II. हाँ जी. Which is the odd one out? Which of this play is not written by Christopher Marlowe? Yes, it is Richard III, and it is written by William Shakespeare, right? It is written by Shakespeare. Question number 18. From the following list, choose the work which is not written by E.M. Foster. Where Angels Fear to Tread, Maurice, A Room of One's Own, or The Longest Journey. And again, you can easily answer this question, which is the odd one out. That is A Room of One's Own. Very good. Which is by Virginia Woolf. और E.M. फॉस्टर का क्या वर्क था? अ रूम विद अ व्यू. ठीक है. E.M. फॉस्टर के नॉवल का नाम था अ रूम विद अ व्यू. क्वेश्चन नंबर 19. Literary works such as Charles Dickens' David Copperfield, Samuel Butler's The Way of All Flesh, and James Joyce' A Portrait of the Artist as a Young Man provides examples of which novelistic form? Novio-Roman or New Novel, एपिस्लरी नॉवल, बिल्डंग्स-रोमन या हिस्टोरिकल नॉवल? हाँ जी. कैसे नॉवेल्स डिस्क्राइब करोगे आप इन नॉवेल्स को? डेविड कॉपरफील्ड, द वे ऑफ ऑल फ्लैश, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन. यस, दे ऑल आर बिल्डंग्स-रोमन नॉवल. वेरी वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 20. ओके, सो जिन स्टूडेंट्स ने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, आपको पहले वाली सारी पीडीएफ्स जो हैं मिल जाएंगी विद इन अ डे और टू. तो अपना नाम और मास्टर केडर का सब्जेक्ट लिख के भेज दीजिए इस नंबर पे. ऑलराइट. हु अमंग द विक्टोरियन ऑथर्स हैज डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज एग्नोस्टिक? नॉन बिलीवर. एग्नोस्टिक होता है नॉन बिलीवर. मैथ्यू आर्नल्ड, चार्ल्स डिकिंस, जॉर्ज इलियट और थॉमस हार्डी. हाँ जी. Which of these Victorian writers describes himself or herself as agnostic? Yes, it was George Eliot. बिल्कुल सही, it was George Eliot. ठीक है. खुशवंत सिंह की तरह, जैसे खुशवंत सिंह ने खुद को कहा था. Yes, non-believer और free thinker. Absolutely right answer. Question number 21. Which of the following plays is not written by Rabindranath Tagore? सेक्रीफाइस, चंडालिका, मुक्तधारा और एकनाथ. हाँ जी. इनमें से कौन सा प्ले रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ नहीं है? सेक्रीफाइस, चंडालिका, मुक्तधारा या एकनाथ? यस, इट इज एकनाथ. वेरी राइट. क्वेश्चन नंबर 22. Who among the following writers describes novels as not form which you see but emotion which you feel? कि novels जो हैं वो इमोशंस होते हैं. ठीक है. नॉवेल्स में आप इमोशंस फील करते हो. दे आर नॉट जस्ट पार्ट ऑफ लिटरेचर. ठीक है. ये एक पार्ट ऑफ लिटरेचर नहीं है, बट ये एक फीलिंग है. टी.एच. लॉरेंस, जॉन रीस, वर्जीनिया वुल्फ और जोसेफ कॉनरेड. हु मेड दिस स्टेटमेंट? यस, दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय वर्जीनिया वुल्फ. इट वॉज अ न्यू क्वेश्चन फॉर यू ऑल, तो प्लीज अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए. दिस वॉज सेड बाय वर्जीनिया वुल्फ. क्वेश्चन नंबर 23. In Paradise Lost, Milton invokes his heavenly muse Urania at the beginning of. हाँ जी, यूरेनिया को वो 2 बार जो है इन्वोक करता है. In which books? Book 1, 4, 9 और 7. In which 2 books? हाँ जी. In which 2 books Milton invokes the heavenly muse? In which 2 books Milton invokes the heavenly muse? I think the options are wrong.
yes, it is 7 and 9. हाँ जी, ठीक है, ऑप्शंस गलत है यहाँ पे जी, इट इज बुक 9 एंड 7. यस यस, 1 में तो होली स्पिरिट है बच्चे, 1 में होली स्पिरिट है, ठीक है, देन 4 में होली लाइट है, ठीक है जी जी जी, राइट. Question number 24. In relation to Spenser's Fairy Queen, which of the following character virtue link is rightly matched? हाँ जी, Justice-Artegall, Courtsey Guyan, Temperance Calidore, Chasity-Britomart, Justice Guyan, Temperance-Talus. Courtsey Calidore, Temperance Guyan, Justice-Artegall. Courtsey Calidore, Temperance-Artegall या Justice-Britomart. Which one is right? हाँ जी, which one is right? इनमें से कौन सा मैच करेक्ट है? Virtue link, very right. Courtesy is for Calidore, Temperance is for Guyan and Justice is for Artegall. आपको एक भी याद है ना, ठीक है, अगर आपको एक भी याद है, आई थिंक कहीं ना कहीं वो चीज काम कर जाती है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 25. मैच द फॉलोइंग लिस्ट. हाँ जी, आपको सेटिंग्स के साथ मैच करने हैं नॉवेल्स. द पावर एंड द ग्लोरी, द क्वाइट अमेरिकन, द ऑनररी कॉन्सल, द कॉमेडियंस. हाँ जी, आपको इनके सेटिंग्स मैच करनी है. चलिए फटाफट से. द पावर एंड द ग्लोरी, मैक्सिको. बच्चे आज मैंने सभी की आंसर कीज प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है, हो सकता है कल सर आपको प्रोवाइड कर दें, ठीक है. क्वाइट अमेरिकन इज वियतनाम, राइट. ऑनररी कॉन्सल इज पैराग्वे एंड द कॉमेडियंस इज हाइटी, है ना. अब देखो यहाँ पे मुझे भी ये दो याद थे, ठीक है, मुझे भी ये दो याद थे, पावर एंड ग्लोरी याद था, कॉमेडियंस याद था. तो यस, इट इज 4132. वेरी गुड. Question number 26. In Wuthering Heights, Kathy appears in a dream, beating at a window, wailing, "Let me in blood running down her wrist." Who dreams her? Lockwood, Nellie, Heathcliff या Edgar Linton? हाँ जी, कैथी किसके ड्रीम में आती है वुदरिंग हाइट्स में, पूरी ब्लड में भीगी हुई, एंड शी सेज लेट मी इन. हाँ जी संध्या, वहां पे भी सेंड होंगे बच्चे. यस, इट इज लॉकवुड, इट इज लॉकवुड. वुदरिंग हाइट्स में लॉकवुड उसका ड्रीम देखता है, फिर ही उसके बाद वो नेली से सारे सवाल करता है ना. क्वेश्चन नंबर 27. In Pinter's birthday party, Stanley is given a birthday present. What is it? A toy, a piano, a drum, or a violin? Yes, it is a toy drum. Right, it's a toy drum. Question number 28. How does Lord Jim.end? Jim is shot through the chest by Doramin. Jim kills himself with a last unflinching glance. Jim answers the call of exalted egoism and betrays Jewel. Jim surrenders himself to Doramin. How does the novel Lord Jim end? Lord Jim कैसे end होता है? Yes, Jim is shot through the chest by Doramin. जब जिम आके डोरामिन को बताता है कि डेन वॉरिस की डेथ, तुम्हारे बेटे डेन वॉरिस की डेथ मेरी वजह से हुई है, तो डोरामिन उसको गोली मार देता है. क्वेश्चन नंबर 29. An epistle to Dr. Arbuthnot present portraits of the following contemporary individuals: Edison and Lord Harvey, Dryden and Rochester, Swift and Steele, Smollett and Defoe. हाँ जी, An epistle to Arbuthnot में कौन से दो कंटेम्पररी इंडिविजुअल्स को पोर्ट्रे किया गया है? यस, इट इज जोसेफ एडिसन एंड लॉर्ड हार्वे. बिल्कुल सही. लॉर्ड हार्वे को ही डॉक्टर आर्बथनॉट कहा गया है, ठीक है, लॉर्ड हार्वे को ही डॉक्टर आर्बथनॉट कहा गया है. क्वेश्चन नंबर 30. In the late 17th century, a battle of books erupted between which two groups? Cavaliers and Roundheads, abolitionists and enthusiasts for slaves, champions of ancient and modern learning, or the Welsh and the Scots? देखो क्वेश्चन वही है, बट दे आर डिफरेंटली आस्क्ड, है ना. दिस इज व्हाट यू कैन फील, आई गेस. क्वेश्चंस वही हैं, बट क्वेश्चन की फॉर्म अलग है. यस,
champions of ancient and modern learning. Question number 31. In which of Hardy's novels does the character Abel Whittle appear? Far from the Madding Crowd, The Return of the Native, A Pair of Blue Eyes, or The Mayor of Casterbridge? हाँ जी, Abel Whittle. तकरीबन क्वेश्चंस वही है राहुल, फॉर्मेट नया है. एबल विटल कौन से नॉवल का कैरेक्टर है? यस, इट्स द कैरेक्टर इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज. वेरी गुड. जिन्होंने डी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. इट्स पार्ट ऑफ मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज. क्वेश्चन नंबर 32. इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हरि कथा इज स्ट्रैटेजिकली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कॉन्शियसनेस रेजिंग? किस नॉवल में हरि कथा को मीडियम यूज किया गया है? Waiting for the Mahatma, The Serpent and the Rope, A Bend in the River, or Kanthapura? Yes, it is Kanthapura. जिसमें कौन सुनाता है हरि कथा? जय रामचर. And he mixes politics with religion, है ना? He mixes politics with religion. ठीक है? रामायण की मदद से, रामायण की मदद से वो लोगों को जो है बताता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो रावण है, राम जो है वो महात्मा गांधी है, और हमारी भारत माता सीता माता है जिसको गांधी जी बचाना चाहते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. आइडेंटिफाई द टेक्स्ट इन द फॉलोइंग लिस्ट व्हिच ऑफर्स द फिक्शनलाइज्ड सर्वे ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम एलिजाबेथन टाइम्स टू 1928. E.M. Foster, The Eternal Movement, Virginia Woolf, Orlando, Robert Graves, Goodbye to All That, और David Jones in parenthesis. हाँ जी, किस नॉवल में इंग्लिश लिटरेचर का सर्वे किया है एलिजाबेथन एज से 1928 तक? यस, इट इज इन वर्जीनिया वुल्फ, ऑरलैंडो. वेरी गुड. जो कि वीटा सेक्विल वेस्ट की बायोग्राफी है. क्वेश्चन नंबर 34. In Blake's poem A Poison Tree, the speaker's anger grows and becomes a cherry, an apple, an orange, or a rose? हाँ जी, पॉइजन ट्री में जो स्पीकर का एंगर है, it grows and becomes, very good, so you are very good at this, you must have read. Yes, it's an apple. It changes into an apple. Question number 35. I.A. Richards' practical criticism inaugurated a new phase in history of English critical thought. What was this book's subtitle? Studies in Poetry, A Study in Literary Judgment, Essays and Studies, or a Theoretical Guide? हाँ जी, practical criticism का subtitle क्या था? Very good. अरे वाह, जिन्होंने बी आंसर दिया है दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट. अ स्टडी इन लिटरेरी जजमेंट. वेरी वेरी राइट. क्वेश्चन नंबर 36. Why are Scott's novels called Waverley novels? His novels are all set in Waverley. The Waverley Castle has a significant role in his novels. Waverley is a model hero for the protagonists of Scott's novels. Scott started his novel writing career in his 43rd year with the novel Waverley. हाँ जी, why his novels are called Waverley novels? इसका तो आसान सा जवाब है, because his novels, all novels are set in Waverley, है ना? Because all his novels are set in Waverley, that is why. No, there is no novel like Waverley. Waverley is the setting. Janvi, Waverley is the setting. Waverley is not a novel. Scott started his novel writing career in his 43rd year with the novel Waverley. Waverley is not a novel. Waverley is not a novel, it's a setting. Yes, it's a setting. अरे वेवरली नॉवल कहाँ था? वेवरली सेटिंग थी. But why are Scott's novels called Waverley novels?
क्वेश्चन भी तो देखो ना, चलो ठीक है, हाँ मुझे याद आ गया, ठीक है, सॉरी सॉरी मुझे याद आ गया, लेकिन क्वेश्चन देखो, that why all his novels are called Waverley novels. सिर्फ एक नॉवल की वजह से तो वेवरली नहीं कहा जाता ना बच्चे, सिर्फ एक नॉवल की वजह से वेवरली नहीं कहा जाता, क्योंकि उसके सारे नॉवेल्स वेवरली में सेट हैं। ये एक नॉवल की वजह से तो नहीं वेवरली नॉवेल्स कहते ना, इसके साथ तो अग्री करोगे, पहले वाली बात चलो मुझे याद आ गई। यस, ही रोट नॉवल कॉल्ड वेवरली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, who among the following women writers has written novel on yellow paper? हाँ जी, एलिजाबेथ स्मिथ, स्टेवी स्मिथ, जुलू सफोला और गीता मेहता। यस इट इज, अगेन ऑप्शंस ने ही क्लियर कर दिया, स्टेवी स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 38, Philip Larkin's The Whitsun Weddings describes a long train journey, establishes a V voice of collective outlook, traces the disfigurement of a sunny landscape on an advertising poster, gives an account of a drug pusher. So the correct combination according to the code is, हाँ जी, The Whitsun Wedding, Whitsun Wedding के अकॉर्डिंग कौन सी दो चीजें यहाँ पे करेक्ट हैं? Yes, it is describes a long train journey and establishes a V, voice of collective outlook, right? Question number 39. Which narrative poem by Lord Tennyson presents the story of a fisherman turned merchant sailor who, after a shipwreck, is marooned on a desert island, crossing the bar, Tithonus, Enoch Arden, or Maud? So, which poem is about a fisherman? Yes, it is Enoch Arden. Very right. Question number 40. In R.K. Narayan's Swami and His Friends, which game offers Swami the best kind of emotional release from the strains and pressures of disagreeable circumstances? So that game is, again, this is a very easy question. The game which is played by the friends of Swami, yes, it is cricket. Question number 41. An English poet couldn't help the excitement that an historical event caused in his life. Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. Which poet? What dawn? W.H. Auden, The Spanish Civil War. Lord Tennyson, The Jubilee of Queen Victoria, Reign. विलियम वर्ड्सवर्थ द फ्रेंच रेवोल्यूशन या विलियम ब्लेक द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? हाँ जी, किस राइटर ने अपनी एक्साइटमेंट बयान करी है इन वर्ड्स में? यस, विलियम वर्ड्सवर्थ, द अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एब्सोल्युटली राइट। In which city did John Ruskin see a paradigm for Victorian Britain? Paradigm means example. Vienna, Venice, Rome or Paris? जॉन रस्किन को दूसरी किस कंट्री में पैराडाइम दिखाई देता था, एग्जाम्पल दिखाई देता था विक्टोरियन ब्रिटेन का? So he saw that paradigm in Venice. Yes, it was Venice. Very good. Question number 43. The four moral essays of Alexander Pope are addressed to carefully selected figures. Identify the correct group. Simons, Newton, Martha Blount, Wellington, Lord Cobham, Robert Walpole, Houghton Hall या Chandos? Martha Blount, Lord Cobham, Bathurst या बर्लिंगटन? मिक्स सा रखा है राहुल, मिक्स सा। जॉन हेडन, जोसेफ एडिसन या जॉन डेनिस? Yes, it is Martha Blount, Lord Cobham, Bathurst and Wellington. Question number 44. Gulliver receives the following response when he boasts about his countrymen. The most pernicious race, pernicious is hateful, race of little odious vermin. Again, odious is hateful creatures that nature ever suffered to crawl upon the face of the earth. Whose response? The king of Lilliputs, the king of Brobdingnag, the governor of Drubdribs, or the first of the Hohenheims he meets? हाँ जी, कौन कहता है the most pernicious race of little odious vermin? Little odious vermin. See, I am giving you the hint. Little
कहां पे लिटिल था वो? द किंग ऑफ ब्रॉबडिंगनैग। ब्रॉबडिंगनैग में वो छोटा था ना, ब्रॉबडिंगनैग में उसको जायंट्स मिले थे, ठीक है, ब्रॉबडिंगनैग में उसको जायंट्स मिले थे, वहां पे किंग ऑफ ब्रॉबडिंगनैग ने उसको जो है मोस्ट पर्निशियस रेस ऑफ लिटिल ओडियस वर्मिन बोला था, राइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन, where according to T.S. Eliot are we likely to find not only the best but the most individual part of a poet's works? In the poet's juvenilia or rejected drafts, in the best anthologies and scrapbooks, in those parts where the dead poets assert their immortality, in those parts where the living poets depart from their ancestors. Hanji, according to T.S. Eliot, are we likely to find not only the best, कहां पे हमें एक पोएट के बेस्ट बट मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स मिलेंगे? यस, पोएट्स के जुवेनेलिया में जो चीजें वो अपने बचपने में लिखता है, इमेच्योरिटी में लिखता है, या जो ड्राफ्ट्स वो रिजेक्ट करता है, ठीक है, वहां पे आपको पोएट की बेस्ट राइटिंग मिलेगी। ऑलराइट, तो हाँ जी, in Geronation, T.S. Eliot says, Dash has many cunning passages, contrived corridors, and issues, thieves with whispering ambitions, guides us by vanities. What is Eliot's subject? हाँ जी, Dash, last question एक रह गया. Dash has many cunning passages. क्या आएगा यहाँ पे? History, right? History has many cunning passages, right? Okay, so thank you so much, everyone. Have a very good day. Now I'll see you on Monday. So keep learning, keep preparing like this. Have a very good day, and we'll see you on Monday now. Thank you.